हेलो। So welcome to the class. In this sessions we are going to deal with India and South Asian relations, right? And South Asian relations will be done particularly in terms of ASEAN organizations, Association of South Asian Nations, Association of Southeast Asian Nations. Right? So if we see, this is South Asian nations. ये आपका साउथ एशियन नेशंस में है. Now the type of questions and the patterns of the exam suggest that we should, because all these nations were come close in 1967, form an Asian Association of Southeast Asian Nations in Bangkok. ठीक है, तो थाईलैंड में ये मिलते हैं. इन दिस थाईलैंड, वी ऑल नो थाईलैंड popularly. So particularly also we know the Bangkok, right? So that is in Bangkok, all these nations of Southeast Asian nations met and formed a associations of Southeast Asian nations. So हम क्या करेंगे कि हम individually every nations के साथ करने से, that is a relations has been India और Southeast Asia relations established through Asian nations. ठीक है, उनके मिरर के थ्रू वो रिलेशंस गवर्न होता है. क्लियर? लाइक ईयू, जब आप ईयू के साथ कोई नेशंस अगर ट्रीटी करता है किसी भी, तो ईयू में जो 27 मेंबर्स हैं, इट इज कंसीडर्ड दैट द ट्रीटी इज बीन डन विद ऑल द यूरोपियन यूनियन नेशंस. सिमिलरली ऑन द सिमिलर लाइन इट इज एप्लीकेबल टू एशियन नेशन. ठीक है, so this is India and this is the Southeast Asian nation. So actually these all nations are in the Indian Oceans, right? And this is east to the India. Yes or no? तो इंडिया की एक पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी, जो पहले कंसाइन थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पर्सपेक्टिव से, फिर उसको एनलार्ज किया गया लुक ईस्ट पॉलिसी को, और उसमें इंक्लूड किया गया साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को भी. राइट नाउ दिस लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया is also be enlarged. Is to act in the eastern. Now why it is important for India to establish a relations with Southeast Asian nations? क्यों important है? चाइना, ये देखिए ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, राइट? दिस इज मलक्का स्ट्रेट, हमने ऑलरेडी देखा है, राइट? जो ट्रेडिंग रूट होता है, मेजर ट्रेडिंग रूट, राइट? हियर इज साउथ, दिस इज साउथ चाइना सी, जहां पर चाइना जो है BRI और मैरीटाइम सिल्क रूट के अंदर में क्रिएटिंग एन रूट. सो टू अवॉइड और टू काउंटर द चाइना presence in Indo-Pacific regions, it is necessary India to have a relations with ASEAN nations. समझ रहे हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर relations इंडिया को अगर काउंटर करना है चाइना को, तो ASEAN is on one of the important, because Southeast Asian nation falling in the preview of Indian Oceans, Indo-Pacific region, which is an important in contemporary world, important region for the any nations. So for this, India has a relation established with the ASEAN, right? So this is Association of Southeast Asian Nations. These are the members to the ASEAN nations, right? And in 1967, all the Southeast Asian nation come together and they formed an ASEAN. कहाँ पर? Bangkok. In
बैंकॉक, ये ओके ना, थाईलैंड, बैंकॉक. Is it clear? Right, with the vision of, they have also established a vision, or we can say that motto is one vision, one identity and one community. ठीक है. So here we will see how significance of ASEAN to the India and significance of India to ASEAN, क्योंकि एशियन नेशंस को भी इंडिया की जरूरत है टू काउंटर चाइना, इंडिया को भी जरूरत है एशियन नेशंस का टू काउंटर चाइना, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है यहाँ पर, हेजेमनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, चलिए. सो राइट डाउन एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन. थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी हम इसका देख लेते हैं, देन वी विल डायरेक्टली मूव टू द रिलेशंस. ASEAN, ASEAN established in 1967 in Bangkok, Thailand. ASEAN established in 1967 in Bangkok, Thailand, with signing ASEAN Declaration, with signing ASEAN Declarations, inverted comma, with signing ASEAN Declarations, also known as Bangkok Declarations. ठीक है. Now write on the founding member of ASEAN. कौन कौन थे founding members? Indonesia, Malaysia. Write down the founding members of ASEAN. Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thailand. Indonesia, Malaysia, Singapore. Strait of Malacca is between Malaysia and Singapore. ठीक है. Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines. This is a Philippines and Thailand. ठीक है. अभी टोटल कितने? 10. बाकी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रूनी, म्यांमार, ये सब इन्होंने बाद ज्वाइन किया. ठीक है, राइट. द लास्ट वन टू ज्वाइन इज कंबोडिया 1999. तो टोटल आर 10 मेंबर्स. ये सब देखिए, सभी 10 मेंबर्स के फ्लैग यहाँ पर है. राइट. नाउ राइट ऑन द मोटो ऑफ एशियान इज, मोटो ऑफ एशियान, देखिए इन्होंने 36 कहा था, अभी तक नहीं आए. इज टेकिंग ए पावर नैप. द मोटो ऑफ एशियान इज, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, वन विजन, कॉमा, वन आइडेंटिटी, कॉमा, वन कम्युनिटी. One vision, one identity, one community, inverted comma close. This is a motto of the ASEAN nations. Now write down next the aim and purpose of ASEAN is to cooperations in their economic. The aim and purpose of the ASEAN hyphen cooperations in the economic, social हाइफन, एक ऐसी लाइन खींचिए, कोऑपरेशंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, शुरू, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, एजुकेशनल and other fields
other fields and to promote peace and stability of the region. And to promote peace and stability in the region through abiding respect for justice and the rule of law, through abiding justice. Abiding means hota hai attached to the abiding, attached to the rule. So through abiding respect for justice and rule of law and adherence to the principle of UN Charter, and adherence to the principle of UN Charter. To the principle of United Nations Charter. Next point. According to Article 31 of ASEAN Charter, according to Article 31 of ASEAN Charter, the chairmanship of ASEAN nation shall rotate. According to Article 31 of ASEAN Charter, the chairmanship of ASEAN shall rotate annually. Shall rotate annually based on alphabetical order of English name of member state. Of the name of the English name of member states. ठीक है, जिसका पहले नाम होगा वो पहले उसके पास होगी. तो सबसे पहला कौन करेगा? ब्रूनी, बी, देन आफ्टर कंबोडिया, अकॉर्डिंगली ऐसे ही चलता जाएगा. ठीक है. द लास्ट वुड बी वियतनाम. फिर उसके बाद फिर रोटेट होगा. So for the 10 year it will continue from 1 to 10. फिर the 11th year again it will come to the Brunei. चेयरमैनशिप ऐसे ही है. SCO का भी वैसा ही है. देखिए G20 का भी वैसा ही है. हर जगह का ऐसा ही चलता है. ठीक है. नाउ राइट डाउन पिलर ऑफ एशियान. पिलर्स ऑफ एशियान. So there are 3 pillars. First is ASEAN Political Security Community, APSC, ASEAN Political Security Community. मैं आप लोगों को सिर्फ ब्रीफ बता रहा हूँ एशियान के बारे में. ठीक है ना. रिसेंट डेवलपमेंट और यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. ASEAN Political Security Community, APSC. With aim to ensure, APSC aims at, with aims to ensure that countries in the region live at peace, LIVE, live at peace with one another and with the world in with one another, aims to establish or ensure the countries in the region live at peace with one another and with the world in a just democratic and harmonious environment. With one another and with the world, in a just, democratic and harmonious environment. ठीक है. So this is the first pillar, APSC. Second, ASEAN Economic Community, AEC.
एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, AEC, ब्रैकेट में AEC, बिकॉज जब भी अब हम फर्दर इंडिया का एशियान रिलेशंस करेंगे वी विल गोइंग टू राइट एन एब्रिविएशन APSC AEC, ठीक है। established in 2015, is a major milestone in regional economic integration agenda. Established in 2015 is a major milestone in the regional economic integration agenda. Regional economic integration agenda, offering opportunities in the form of a huge market, offering opportunity in the form of a huge market, ठीक है। मार्केट इन बोथ टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स में भी और पीपल्स परचेजिंग, क्योंकि यहाँ पर कितने 622 मिलियन पीपल्स के लगभग है इन दिस रीजन्स, सो इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल, ठीक है। थर्ड, एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ASCC, ASEAN Socio-Cultural Community, aims to contribute realizing an ASEAN community, aims to contribute to realizing an ASEAN communities that is people oriented and socially responsible, aims to contribute to realizing an ASEAN community people oriented and socially responsible with a view to achieving enduring solidarity, with view to achieving enduring socially responsible, ब्रेक के बाद हैवी हो जाता है लंच के बाद, socially responsible with a view to achieving enduring solidarity and unity among the people, solidarity and unity among the people and member of states of ASEAN. फ्यूलिंग के बाद तो एवरेज सही हो जानी चाहिए, स्पीड भी सही हो जानी चाहिए, यही तो गलत करते हैं। अच्छा, इट्स अ साइंस क्वेश्चंस, व्हाई आफ्टर हैविंग लंच और फूड इनटेक ऑफ फूड वी फील कोल्ड, कोल्ड ठंड लगती है ना, कोल्ड, ठंड ओल्ड नहीं कोल्ड, ठंड लगती है ना, इसी वजह से सारी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती है, इस वजह से आदमी कोल्ड फील करता है, डल फील करता है, इसलिए कम खाया कीजिए। हाँ हाँ, लेकिन मैं एनर्जेटिक हूँ, मजबूरी बूस्ट तो हो नहीं सकता। So now I will write down ASEAN relations. Now what you have written is just an overview related to ASEAN. ASEAN के बारे में पूरा डिटेल नहीं है, that you have to get it. This is just an overview to understand the relations. ठीक है? Now Indian ASEAN relations. So right now first point, India's ठीक है,
India's focus on strengthened and multifaceted relations. India's focus on strengthened and multifaceted relationship. Faceted, FACETD, facet, FACETED, relationship with ASEAN is an outcome of the significant change, is an outcome of the significant change in the world's political and economic scenario, outcome of the significant change in the world's political and economic scenario since the early 90s, and India's own movement towards economic liberalizations. It means it want to say that after the disintegrations of USSR or LPG, जब इंडिया ने now when it has liberalized itself, open its economics 1991 में, then it requires the cooperations of ASEAN. ठीक है, next point. India's search for economic space resulted in the India's search for economic space. सर्च फॉर इकोनॉमिक स्पेस, मुझे ऐसा लग रहा है कोई गायब है बीच से, है ना, ये होता है ब्रेक का मजा. इंडिया सर्च फॉर इकोनॉमिक स्पेस resulted in the look east policy, inverted comma में look east policy, but we have also one replacement, two replacement. नहीं, दो लोग आए हुए हैं, आप दो क्या बोल रहे हो, आ रहा हूं. India's search for economic space resulted in the inverted comma look east policy, in the look east policy. ठीक है, continue the point. The look east policy has matured into a dynamic and action oriented. The look east policy has matured into a dynamic and action oriented act east policy. It's clear? Next point. फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, दे हैव स्टार्टेड टू लुकिंग ईस्ट, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट किया हमने टू इनकलकेट द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, क्योंकि ऐसा कंसीडर किया जाता था, द नॉर्थ ईस्ट इज बीन सेपरेटेड. ठीक है, तो वहाँ SEZ का हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कराया नॉर्थ ईस्ट में. आप देखिए तो ऑयल फील्ड, असम में ऑयल फील्ड का एक्सप्लोरेशन किया गया बाय द रिलायंस हैज इट्स ओन एक्सप्लोरेशन सेंटर इन असम. ठीक है, in the northeast. Then we have provided SEZ and all to inculcate or to make a development in this region also, and extended that look east policy towards the eastern. Now we have been in the process of act east policy. अब हम काम करेंगे उनके साथ मिल करके, हम अब उनकी तरफ देख रहे थे for the cooperations and everything. Now we will act. ठीक है, next point. The year 2017 marked the 25th anniversary of the year 2017 marked th anniversary of dialogue partnership between India and ASEAN.
25th anniversary of dialogue partnership between India and ASEAN. Clear? Next point. Year 2017 also completed 15 year of year 2017 also completed 15 years of ASEAN India dialogue at summit level. ASEAN India dialogue at summit level, which means summit at summit level, which means dialogue between heads of government of Brunei, Cambodia, which means dialogue between the heads of government of Brunei, 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 Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Laos, Myanmar and Vietnam, all the 10 individually. अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिविजुअली इनके साथ डायलॉग दैट culminated into 15 years of on and Vietnam on one hand and India on the other hand. On one hand and India on the other hand. एक तो collectively relations was completed 25 years and individually summit level means जब भी हो meeting with all these head of the government. ठीक है, next point. That is when started from this. Next year 2017 also commemorated the completion of 5 year of 2017 also commemorated the completion of 5 years of strategic partnership between Asia's third largest economy, that is Asia's third largest economy and one of the most successful economy in the grouping in the world. Not Singapore, India. Asia's third largest economy in India and one of the most successful economic grouping in the world. ठीक है, next point. India become ASEAN inverted comma में लिखिए, India become ASEAN's inverted comma sectoral dialogue partner. Sectoral dialogue partner in 1992. ठीक है, next. India become a full dialogue partner with ASEAN in 1995. India become ASEAN's full dialogue partner in 1995. Next, India become members of ASEAN's regional forum. India become members of inverted comma ASEAN regional forum 1996. Next, India become inverted comma summit level partner in 2002. Summit level partner in 2002.
समिट लेवल पार्टनर समझ रहे हैं ना, जब समिट हुई, इंडिया आया, समिट में पार्ट लिया, देन इंडिविजुअली उसी समिट में ईच इंडिविजुअल हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ मीटिंग होगी, जिसका 15 इयर्स आपने अभी लिखा इन द 2017, इट्स सेलिब्रेट द 15 इयर्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म, राइट? तो दैट इज समिट लेवल. Whenever the whole grouping called for a summit, India is also called in 2002 become a summit partner. It means during it will interact with each सभी के हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ वो इंडिविजुअली इंटरेक्ट करेगा, रिलेशंस एंड एवरीथिंग. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, एशियन इंडिया रिलेशंस एलिवेटेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ASEAN India relations elevated to strategic partnership in 2012. ASEAN India relationship elevated to strategic partnership in 2012. Next point. India's lookist policy transformed into Act East policy in 2014. Act East transformed in Act East policy in 2014. अच्छा, year you are asking. Sorry, in 2014. Next, India ASEAN celebrate 25 years of their relationship in 2018, and leaders of all 10 ASEAN countries invited as a chief guest for Republic Day parade in 2018. And invited as a chief guest for the Republic Day parade in 2018. It's clear? So this is a timeline of India-ASEAN relations. Now write down relations between India and ASEAN. Now we will see in the individual economic, political, geographical, cultural क्या क्या इनमें development हुई है. So write down India-ASEAN relationship. First heading is political. Main heading India-ASEAN relationship. Under that the first subheading is political. Write down next point. I mean point under this political. India-ASEAN observe 25 year of their dialogue partnership. India-ASEAN observe 25 year of their dialogue partnership. In the form of ASEAN India commemorative summit. In the form of ASEAN India commemorative summit. SUMMIT summit. On the theme. Write in the inverted comma. Shared values and common destinations. Shared values and common destiny, not destinations, common destiny. Inverted comma close in 2018. ठीक है? Next point. India's relations with ASEAN is a key pillar of our foreign policy. India's relationship with ASEAN
is a key pillar of our foreign policy and the foundation of our Act East policy. And the foundation of our Act East policy. Next. India has set up a separate mission to ASEAN. Set up a separate mission to ASEAN and East Asia Summit in Jakarta in 2015. India has set up a separate mission to ASEAN and East Asia Summit (EAS) in Jakarta in 2015. Jakarta is in Indonesia. Indonesia, right? With a dedicated ambassador to strengthen engagement. With a dedicated ambassador to strengthen engagement. Ambassador, AMBASSADOR, ambassador to strengthen engagement with ASEAN and ASEAN centric process. ASEAN centric process. Next point. ASEAN India Center, AIC. Point. ASEAN India Center, AIC, was established to undertake policy research, comma, advocacy and networking activities, advocacy and networking activities with the organizations and think tanks in India and ASEAN. Networking activities with organizations and think tank in India and ASEAN. Think tank. थिंक टैंक क्या है? एक ऐसा ग्रुप, हाँ, एक ऐसा ग्रुप जो हमेशा प्रोग्रेस के लिए कार्यरत हो, सोचता हो क्या नया करना चाहिए, क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए. दिस इज थिंक टैंक. नीति, तो नीति आयोग इज अ थिंक टैंक. प्लानिंग कमीशन एक्सपोनेंशियल, मतलब वो बना रही थी प्लानिंग. प्लानिंग कमीशन ड्रॉबैक इज दैट इट इज अ टॉप टू बॉटम अप्रोच, राइट, एंड नीति आयोग इज बॉटम टू टॉप अप्रोच. ये दोनों फर्क है, ठीक है, राइट. तो दिस इज पॉलिटिकल. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक. थिंक टैंक in India and ASEAN. Next is economic. ASEAN India Free Trade Area has been completed with the ASEAN India Free Trade. Has been completed with the entering into force of ASEAN India Agreement, into force of the ASEAN India Agreement
on trade in services and investment. Trade in services and investment in 2015. ठीक है. Next point. ASEAN and India have been also working on ASEAN and India have been also working on enhancing private sector engagement. Working on enhancing private sector engagement. ठीक है. Next point. ASEAN being India's fourth largest trading partner. ASEAN is India's fourth largest trading partner. ASEAN is India's fourth largest trading partner. ठीक है. Next point. India has a comprehensive economic cooperation agreement with ASEAN nation. India has a comprehensive economic cooperation agreement, CECA. India has a comprehensive economic cooperation agreement with various ASEAN countries, which has resulted in concessional trade and rise in investment. Which has resulted in concessional trade and rise in investments. Rise, RISE. कंसेशनल ट्रेड मतलब जहां पर कंसेशन में ट्रेड होती हो, पैसे टैरिफ नहीं और इजीली, एंड राइज RISE इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आना एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट पॉइंट. The second ASEAN India workshop on blue economy. The second ASEAN India workshop on blue economy. Blue economy, this ocean economy. ठीक है. Blue, BLU, blue economy, jointly hosted with Vietnam, held in 2018 in India. The second edition of ASEAN India workshop on blue economy, jointly hosted with Vietnam in 2018 in India. It's clear? So ये blue है पानी पानी पानी, I mean oceans. So इसमें जो इकोनॉमिक फिशरीज और जितने भी मिनरल्स हैं, डीप डाउन में जो मिनरल्स मिलते हैं, पर्ल्स, उनसे रिलेटेड जो इकोनॉमी, दैट इज रिलेटेड टू ब्लू इकोनॉमी. आप लोगों को नींद आ रहा ना, इसलिए थोड़ा गाना गाया मैंने. इसने लिखा मैंने सर मजा नहीं आता. सो दिस इज इकोनॉमिक. नेक्स्ट इज कल्चरल. क्या कल्चरल टाइज है इनके बीच में? यू नो, बुद्धिज्म. कितनी बार तो हमने डिस्कस किया है. कल्चरली डाइवर्सिटीज. रामायण महाभारत जो इंडियन एपिक है वो वहां पे फॉलो करते हैं. रामायण महाभारत उनके यहाँ पूरे साल, इन इंडोनेशिया, थाईलैंड, होल ईयर. हमारे यहाँ रामायण जो वो होती है 9 दिनों में होती है, दैट इज ड्यूरिंग द नवरात्रास. उनके यहाँ पूरे साल होता है स्टेज शो रामायण कल्चरल. इंडोनेशिया एंड एवरीथिंग. हाँ, गरुड़ एयर स्पेस भी है. तो कल्चरली वी आर टाइट.
हाँ, इन कल्चर. So culturally we are also very much attached with this. So next is cultural. So right on first point, Buddhism formed the spiritual nucleus of ASEAN India relations. Buddhism forms the spiritual nucleus Buddhism forms the spiritual nucleus of ASEAN India relations. As Buddhists form all over the region flock for pilgrimage, Buddhist as Buddhist from all over the region, REGIN region, flock for pilgrimage, comes to pilgrimage, flock, FLOCK, for pilgrimage. Shrines like Bodh Gaya, and Bodhi tree. Bodhi tree, importance आप जानते हैं दोनों का, बोध गया एंड बोधि ट्री. दिस इज द सेम ट्री अंडर विच द गौतम बुद्धा गॉट इट एनलाइटमेंट. ठीक है. धर्म चक्र परिवर्तन, वो 7 stages in the life is represented by the 7 symbol: lotus, chakra, horse. horse is transition, जब वो वहां घर से छोड़ करके यहाँ जाते थे तब. that is a 7. वो आप that you will learn in history. नेक्स्ट, 3 ही बताया मैंने, बाकी 4 आपको पता ही है. नेक्स्ट, द इंडियन एपिक रामायण एंड महाभारता. द इंडियन एपिक रामायण एंड महाभारता आर ह्यूजली पॉपुलर इन थाईलैंड एंड इंडोनेशिया. Are hugely popular in Thailand and Indonesia, and have influence on popular art forms, like shadow puppetry, Katputli, puppetry, PUPPERTY, puppetry, yes, puppetry, shadow puppetry, कठपुतली. शैडो पपेट्री कहां पर पॉपुलर है? बंगाल में शैडो पपेट्री चलती है. कठपुतली दैट इज इन राजस्थान, बट इट्स अ फॉर्म, आर्ट फॉर्म. परछाई, यस. देखिए, एक तो पपेट्री होती है जो डायरेक्ट ये करते हैं, एक शैडो कर्टन पीछे कर रहे हैं, उसका शैडो ऊपर आ रहा है, दैट इज शैडो पपेट्री. नेक्स्ट, इंडिया ऑफर्ड टू होस्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम एशियन कंट्री. इंडिया offered to host participant from ASEAN countries to the 5th International Buddhist Conclave held in Varanasi in 2016. 5th International Buddhist Conclave held in Varanasi 2016. So this is cultural. ठीक है. Write down. Next is security. Subheading security. UP. अच्छा, year 2016.
Next is security. The main forum for ASEAN security dialogue is the main forum, FORUM, forum of ASEAN security dialogue is ASEAN Regional Forum. Regional Forum. Next point. In 2018, a summit meeting of leaders decided to identify, in 2018, a summit meeting of leaders decided to identify cooperation in maritime domain, in cooperations in maritime domain as the key area of cooperation under the ASEAN India strategic partnership. Under the ASEAN India strategic partnership. Next point. The ASEAN Defense Ministers Meeting, ADMM, the ASEAN Defense Ministers Meeting, ADMM, is the highest defense consultative and cooperative mechanism in ASEAN. Consultative and cooperative mechanism in ASEAN. Next point. ADMM plus. ADMM is ASEAN Defense Ministers Meeting. Now there is a new ADMM plus, which club of or together 10 defense ministers of 10 ASEAN nations plus China, India, New Zealand, Japan, Korea, Russia, USA. Right on. ADMM plus brings together defense minister from all the 10 ASEAN nations, plus defense minister from Australia, China, 10 ASEAN nations plus defense minister from Australia, नेशंस प्लस इनके अलावा जो प्लस में एडीएमएम तो वो है जो 10 एशियन नेशंस के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं. प्लस का क्या मतलब मीन्स मोर नेशन इज बीन इंक्लूडेड. प्लस डिफेंस मिनिस्टर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, but they have called for it, Japan, New Zealand, South Korea, Russia and USA on a biennial basis. Biennial basis, BIANNUAL, BIANNUAL means every 2 years they will meet on a biennial basis. ठीक है. So this is security. Now write down next is defense cooperation. Do you know
आपको पता ही होगा that Thailand is one of the nations with which India has arrival facility. Visa on arrival facility. एक तो जहां आपको जाने के लिए पहले वीजा लेना पड़ता है, विदाउट वीजा नहीं मिलेगा। एक आप वहां जा करके वीजा ले लीजिए, वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी। तो भगा दिए जाएंगे वहां से, फिर वीजा नहीं लेंगे। तो वीजा तो कंपलसरी है, आप वहां चले जाइए, आपको वीजा मिल जाएगा। बिना वीजा हम सिर्फ और सिर्फ नेपाल जा सकते हैं, हाँ, भूटान जा सकते हैं। पीपल टू पीपल एक्सचेंज हमने देखा था ना, वहां वीजा चाहिए, लेकिन प्री डिटरमाइंड नहीं कि पहले से आपको वीजा मिले तभी आप जाए। आपने आज प्लान किया थाईलैंड जाना है, बैंकॉक पहुंच जाइए, वहां पर इमिग्रेशन में जाइए, वीजा लीजिए और फिर घूम करके आइए, फिर वापस। रसिया भी ठीक है। सो डूइंग डिफेंस कॉपरेशंस, राइट डाउन। जॉइंट नेवल एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस आर कंडक्टेड, joint naval and military exercises are conducted between India and most ASEAN nations. Next point, the Maiden, MAIDEN, Maiden ASEAN India Maritime Exercise held in 2023. The Maiden means first time, MAIDEN, the first ASEAN India Maritime Exercise. The Maiden ASEAN India Maritime Exercise held in 2023. Next, watershed military exercise in 2016. Watershed military exercise in 2016. It's clear? So this is defense cooperations. Next is connectivity. In 2013, India became the third dialogue partner of ASEAN. In 2013, India became the third dialogue partner of ASEAN to initiate an ASEAN Connectivity Coordinating Committee. An ASEAN Connectivity Coordinating Committee India meeting. Coordinating Committee India meeting. Next, एक हमने किया था when we have doing the India Myanmar, one of the project, connectivity project, that one is कालादान project. रिमेंबर है, आपने किया यार। फिर एक ITNSC भी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, also connecting through this, so that is also included into India ASEAN connectivity. So next point, India has made considerable progress in implementing the India Myanmar Thailand, ये भी हमने under this, considerable progress in implementing India Myanmar Thailand trilateral highway
and the Kaladan multi-modal project. And the Kaladan multi-modal project. Clear? Next point. India, Myanmar, Thailand trilateral highway is extended to include Cambodia, Laos and Vietnam. India, Myanmar, Thailand trilateral highway extended to include Cambodia, Laos and Vietnam. इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड पहले से था ही, दैट इज अ ट्राइलेटरल, इसमें 3 को और ऐड किया गया. दिस एरिया combinations of these 4 is an opium nation. यहाँ बहुत ज्यादा वो अफीम और ड्रग्स बहुत होता है. यस और एक बहुत अच्छा मूवमेंट अफगानिस्तान ने किया है, दैट इज पॉलिसी, इन द टर्म्स ऑफ पॉलिसी अपने यहाँ अफीम की खेती मना कर दी. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड अफगानिस्तान इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस ओपियम. पॉपी से जो बनती है ना ओपियम के प्लांट के पॉपी से फूल से, दैट इज यूज्ड. अलग उसके ओपियम के प्लांट के अलग अलग इससे हाँ एवरी कंपोनेंट ऑफ प्लांट इज यूज्ड. पॉपी से आपका क्या बनता है ओपियम, उसके जो फ्लावर और ये पेटल्स होते हैं मतलब पत्ते और ये पेटल जो है उससे ड्रग्स बनता है, हाईली ड्रग्स. हाँ वहां की गवर्नमेंट ने अब बोल दिया हमारे यहाँ कोई खेती नहीं करे, इट इलीगल. नेक्स्ट, India announced a line of credit of $1 billion US. India announced a line of credit of $1 billion US. $1 billion US to promote project that support physical and digital connectivity between India and ASEAN. That support physical and digital connectivity. Physical and digital connectivity between India and ASEAN. And second project, this is the first project, write down second project. And a project, sorry, India and ASEAN, second, and a project development fund with a corpus of 500 crore Indian rupees. A project development fund with a corpus of 500 crore rupees, CORPUS, corpus of 500 crores Indian rupees, to develop manufacturing hub in CLMV countries. In CLMV's countries, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam. CLMV country, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam. At the 13th ASEAN India Summit, manufacturing hub in CLMV, that is Cambodia, Laos, Vietnam, Myanmar, at the 13th ASEAN India Summit held in Malaysia. Sorry, physical, FISICAL, physical,
SICAL means road connectivity or people to people connectivity and also to digital connectivity. ठीक है, these are the relations. Now write down significance of ASEAN India relations. Sorry, at held in Malaysia. सिंगापुर घूमने लायक अच्छी जगह है. यू कैन गो टू सिंगापुर ऑल्सो आफ्टर विजिटिंग टू थाईलैंड. हाँ महंगा तो है. कुआलालंपुर द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेशन. पीपीटी उनका पीपीपी बहुत है, बहुत हाई है. यस यस. हाँ, that we can write down significance of ASEAN India relations. Of ASEAN India relations क्या फायदा है? First, collaboration in knowledge sharing would facilitate innovation and research. Collaboration in knowledge sharing. Collaboration in knowledge sharing would facilitate innovation and research. Next, ASEAN support India. ASEAN support India to play a greater role. ASEAN support India to play a greater role in the political and security domain. Political domain and create a rule-based region. And create a rule-based region. Which is important to both India and ASEAN nations. India and ASEAN nations. Next. Islamic terrorism has the potential to affect Malaysia, Philippines and Indonesia. The Islamic terrorism has the potential to affect Malaysia, Philippines and Indonesia. Indonesia is the largest country to hold largest populations of Muslim. Malaysia ही है ना, Indonesia ही है ना? Yes. And second is India. Islamic terrorism has the potential to affect Malaysia, Philippines and Indonesia. The full stop, continue the point, the political stability in these countries. The political stabilities in these countries are of vital interest to India. Are of vital interest to India. मुझे नहीं लगता आज खत्म होगा. Yes. So this is significance of ASEAN and India relations. So इसको अब कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे. स्लॉट अभी बहुत बड़ा. नेक्स्ट जब शुरू करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एशियान टू इंडिया, दैट इज गो बियॉन्ड. और हमारे पास अब वी आर कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट क्लास आप लोगों की 3 बजे से, आई मीन नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग 3 बजे से है. आप लोगों की है कि नहीं पता नहीं. यू आर फ्री. आप लोग फ्री हैं? कहीं चलते हैं पार्क में, वहीं बैठ के पढ़ते हैं फिर. नहीं, जब फ्री हैं तो फिर स्पेस.
चलिए सर, देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। फ्रॉम हियर ओनली, सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन टू इंडिया। हॉलीडे, जय हिंद। टुमारो इज स्वतंत्रता दिवस। इन द नेक्स्ट, आप सबों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन तो हिंदी बोलिए, टिल टुमारो। हाँ, लेकिन अभी उनके यहाँ गुलामी चल रही है, इसलिए नहीं, अभी तो एंट्रीम गवर्नमेंट है ना, इलेक्शंस इन्होंने एंट्रीम गवर्नमेंट बना दी। उनके यहाँ का इलेक्शन कमीशन कह रहा है अभी 1 साल तक हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो इलेक्शन होगा भी नहीं उनके यहाँ भी। हाँ हाँ, मिलिट्री, और ये मिलिट्री तब तक बैक रहेगी जब तक इनके पास पैसा नहीं आ जाए, क्योंकि जैसे ही मिलिट्री रूल आएगा आईएमएफ पैसा नहीं देगा। डेमोक्रेटिक कंडीशन है, डेमोक्रेटिक सेटअप, तो उन्हें भी पता है। ठीक है, चलिए देन, आप सबों को अग्रिम बधाई स्वतंत्रता दिवस की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल के दिन जलेबी और लड्डू खाइए, समोसे। अरे आपके समोसे तो रह ही गए, इडली का। चलिए, थैंक यू।